Now we'll be discussing questions related to grammar. What are collective nouns? A collective noun is the word used to represent a group of people, animals, or things. For example, a gang of thieves, band of musicians, or a fleet of ships. ये वो words होते हैं जो किसी चीज़ के, जानवरों के या लोगों के ग्रुप को रेफर करने के लिए होते हैं. Like soldiers का crew होता है, sheep का herd होता है, birds का flock होता है, fish का school होता है. तो ये जो words होते हैं जो groups को रेफर करते हैं उनको collective nouns कहते हैं. Let's move on to its exercise. Fill in the blanks with the correct collective nouns. और कुछ collective nouns हमें given है which are gang, crowd, committee, class, crew, audience, family. So first is, it is typical for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. So the collective noun from the above words will be family, which will come here. Second is, the dash applauded heartily at the end of the concert. यहाँ पे audience आएगा. Third is, the dash has just a physical lesson. So, class will be an appropriate collective noun. Fourth is, the dash of robbers was arrested by the police. Gang of robbers was arrested by the police. Fifth is, a dash of people gathered at the accident site. A crowd of people gathered at the accident site. Sixth is, the dash took many important decisions at its monthly meeting. The committee. Seventh and last is, the dash of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. Crew. Moving on to our next grammatical topic, which is of modal verbs. Modal verbs क्या होते हैं? They are verbs which act as helping verb. Helping verb का एक sentence में function क्या होता है? वो main verb को अपना पूरा sense deliver करने में help करते हैं. So modal verbs कौन से होते हैं? Like can, could, shall, should, ought to, will, or would. These are usually used with another verb to express ideas such as possibility, necessity या permission को express करने के लिए ये modal verbs use होते हैं. अब यहाँ पे हम specifically दो modal verbs की बात करेंगे जो कि हैं must और उसका negative form mustn't. Modal verb must क्यों use होता है? For showing strong obligations. किसी strong obligation मतलब किसी फ़राइज़ या ज़िम्मेदारी पर आपको emphasize करना है तो आप modal verb must use करोगे. इसकी क्या condition होती है? मतलब कोई ऐसे काम पे आपको emphasize करना है कि वो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपके पास कोई और option नहीं है. जैसे कि all cleaning must be finished before New Year's Day. ओके मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. एंड देन मसंट किस लिए यूज़ होता है? टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन होता है किसी चीज़ से मना करना और सख्ती से मना करने के लिए मसंट यूज़ होता है. लाइक मदर यू मसंट प्ले विद द मैचेस, मतलब तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि तुम मैचेस से खेलो. Now what is the difference between the usage of should and must? क्योंकि ये दो modal verbs ऐसे हैं जिनके usage को confuse किया जाता है. Should is the past tense of shall. Should is used to denote recommendations, advice, or to talk about what is generally right or wrong within the permissible limits of society. तो ये should किस लिए use किया जाता है? कोई advice देनी है, अपनी कोई suggestion देनी है या कोई recommendation देनी है, उसके लिए should use किया जाता है. लेकिन must किस लिए use किया जाता है? strong obligation को show करने के लिए. should की example देख लेते हैं. You should chew your food properly. अब इसमें आप recommend कर रहे हो कि अगर आप अपने food को अच्छे से chew करोगे तो it will be good for you. And then you should stop smoking. Again आप imply नहीं कर रहे हो कि करनी है आपने smoking बंद. You are just giving an advice कि you should stop smoking. It is bad for your health. And then must is used to talk about an obligation or a necessity. Necessity means ज़रूरत. It is used when people are compelled to do something. Compelled मतलब ज़बरदस्ती.
Example, you must clean the house as your mom is not well. मतलब there is no other option, no way out. घर साफ करना ही करना है because your mom is not well. Let's move on to the exercise of this topic. Fill in the blanks with must or mustn't. She dash eat so much sugar. तो यहाँ पे आएगा she mustn't eat so much sugar. Second is students dash pass an entrance examination to study at this school. Students must pass an entrance examination to study at this school. You dash watch so much television. You mustn't watch so much television. Fourth one is he dash take some medicine for that cough. He must take some medicine for that cough. Fifth one is visitors dash smoke. Visitors mustn't smoke. Moving on to our next grammatical topic, which is of tense. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे टेंस में? Present indefinite tense. The present indefinite tense, also known as simple present tense, denotes a habitual or eternally true factual action. ये किस लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में? या तो किसी आदत को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी फैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए. Simple present tense is often used with words. अब यहाँ पे जो words हैं ये आपके लिए clues हैं कि अगर ये words आते हैं और आपको blanks दी जाती हैं तो इन words के साथ अमूमन present indefinite tense ही use होता है. And these words are always, regularly, every day, daily, normally, generally, usually, occasionally, sometimes, often, rarely, frequently, nowadays, naturally, seldom, constantly, never, every a week, every year, once a year, on a week, at times, at present, now and then, or all the time. Let's look at the verb usage. वर्ब यूजेज क्या होता है इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है लेकिन एस और ई एस के साथ. कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, मतलब उसके साथ एस या ई एस यूज नहीं होता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है. अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डज का यूजेज करोगे या डू का यूज़ करोगे. डज या डज नॉट कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन जब डज आता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस ख़त्म हो जाता है. एंड देन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप डू या डू नॉट यूज़ करते हो. लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शी मतलब जो डूअर ऑफ एक्शन है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. नाउ शी वर्ब का क्या है? काम क्या हो रहा है? राइट्स. शी राइट्स बुक्स. राइट के साथ हम एस यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस यूज़ करेंगे. फॉर उर्दू ट्रांसलेशन ट्रिक क्या होती है? सेंटेंसेस ऑफ उर्दू विच एंड्स ऑन ती है, ता है, ते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत बात करती है, शी टॉक्स अ लॉट. वो रोज़ाना फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल डेली. अब यहाँ पे देखें, दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने प्लेस यूज़ नहीं किया बल्कि जस्ट प्ले यूज़ किया. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टेंस विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Present continuous tense narrates an action which is being continued or going to be continued in the near future. मतलब ये किसी काम के, किसी फेल के जारी होने को बताता है, ठीक है? और वो काम कहाँ जारी है? ज़माना हाल में. इसको present progressive tense भी कहते हैं and it is usually used with words like now, continually, perpetually, at this moment, at the moment, right now, this season, this year, forever, and etc. However, these signs are not necessary all the time for a verb to present progressive tense. अमूमन इनके साथ present continuous tense आता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आप इसके साथ present continuous tense यूज़ करोगे. इसका verb usage देख लेते हैं.
वर्ब यूजेज में विद सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम कम्स विद वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आप इस और एम का यूजेज रखते हो मेन वर्ब के साथ, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है आप आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो एंड अगेन वर्ब प्लस आईएनजी। इसकी निशानी यही होती है कि इस टेंस में आपका वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आ रहा होता है। लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट हमारे पास है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है राइटिंग, मतलब हमने राइट के साथ आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। उर्दू ट्रांसलेशन के लिए क्या हिंट्स होते हैं कि जो सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं पे एंड होते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। वी कैन लुक एट द गिवन एग्जांपल्स। वो रो रही है, शी इज़ क्राइंग, वो मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग मैच। Let's move on to the exercise of these tenses. Make the present indefinite or present continuous sentences. So first one is you bracket में not like chocolate. So हमने negative बनाना था तो हम कैसे बनाएंगे? You के साथ do आता है. You do not like chocolates. Second is she not study given in the brackets blank at the moment. So at the moment ये words हमें clue दे रहे हैं कि present continuous tense use होगा. She is not studying at the moment. Third is they not eat given in the bracket blank rice every day. They do not eat rice every day. Fourth is we not in work given in the brackets blank now. We are not working now. Fifth is it rain given in the brackets blank a lot here. It rains a lot here. Sixth is I go given in the bracket blank on holiday tomorrow. I am going on holiday tomorrow. So our last question is of punctuation. Let's start punctuating the given paragraph. और हमने सिर्फ punctuate ही नहीं करना बल्कि ये भी देखना है कि capitalization की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। Now we are starting our sentence, तो first word का पहला letter हमेशा capital होता है. So on the eve of Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. Full stop. यहाँ पे एक sentence finish है. Then starting a new sentence. So it का I will be capital. It is typical for a Chinese, because it's a proper noun, family to make 8 to 9 dishes for the New Year's apostrophe s eve dinner. आप सोच रहे होंगे कि हम न्यू ईयर के पहले अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल क्यों रख रहे हैं, बिकॉज ये एक फेस्टिवल का नाम है. सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज इन Chinese the word it means इसको inverted commas में रखेंगे because खास emphasis दिया जा रहा है इस पे, means prosperity. This will also become in inverted commas. And the word 9, again it will be coming in inverted commas, means long lasting, again inverted commas, and full stop. With this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor from tutoriadotpk, signing out.